So hello everyone. So in today's lecture, we are going to study about postulates of statistical physics. Okay, so there are six postulates. We are going to discuss these in this video. And if you haven't liked or subscribed the channel, please till yet. So please do it. And yeah, without further ado, let's get to the topic quickly. Okay, so yeah, there are there are some postulates or some things, some guidelines which determine how we are going to uh, do the physics which is going to come in the upcoming lectures. So yeah, first of them is all gases are composed of all gases are composed of a large number of molecules, and these molecules these molecules are in a constant random motion. Okay, this is the first postulate. You can say कि हाँ, अगर हमारे पास there is a gas, ठीक है, and बहुत सारे molecules से compose होती है, and they are in constant random motions, ठीक है, striking with each other and again going apart, and like this it is happening all the time. Okay, ठीक है. Second postulate कि all the cells are of same size in a phase space. सभी सेल्स एक ही साइज के हैं इन अ फेज स्पेस हमने डिफाइन किया था कि मान लो अगर मेरे पास आई हैव समथिंग एंड उसको मैं सेल्स में इन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, आई हैव सम वॉल्यूम, उसको सेल्स इन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, और सो all of them these ones are of same size, all of them are of same size, ठीक है. तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं तो तीनों का साइज सेम है. दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट. नाउ कम टू द थर्ड पोस्टुलेट. टोटल नंबर ऑफ molecules total number of molecules are constant, ठीक है, if n1 n2 n3 are the number of particles in different cells, then n1 plus n2 plus n3 plus up to any number n is equal to constant. अगर मान लो n k है हमारे पास, ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम आर कांस्टेंट, ठीक है. उसके बाद आपके पास चाहे कितने भी हो, यहाँ पे फर्स्ट में n1 पार्टिकल्स, इसमें n2 है, इसमें n3 है, इसमें n4 है, इसमें n5 है, एंड जस्ट लाइक दिस कि लास्ट वाले के अंदर n के, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट. ओके, ठीक है. दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट. Fourth is total energy of the system. Is constant. This is a very obvious thing. तो एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करेंगे. एनर्जी इज n1 E1 plus n2 E2
प्लस अप टू लाइक एन के ई के, ठीक है। यहाँ पे दिस इवन ई टू ई को ई के, दिस इवन represents even represents mean energy of particles in cell 1, जिसके अंदर n1 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर n1 पार्टिकल्स हैं, मान लो अप टू n1 पार्टिकल्स है और एक की एनर्जी E1 है, तो द टोटल एनर्जी विल बी E1 n1 E1 of that cell. Okay, so yeah, fourth is total energy of the system is constant. Fine. Next, fifth one is, this is a little complex. All the accessible microstates corresponding to possible macrostates are equally probable, ठीक है। This is called as principle of equal a priori probability. You have already learnt about this principle of equal a priori probability, कि जितनी भी accessible microstates हैं, ठीक है, वो सब इक्वली प्रोबेबल है। का मतलब क्या है, हमने पहले भी समझाया हुआ है कि मतलब मान लो अगर मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं एंड द पार्टिकल हैज टू गो इन वन ऑफ देम, तो तीनों में जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो इन दिस केस व्हेन यू हैव अ फेज स्पेस एंड जिसके अंदर आपके पास n के नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो उस पार्टिकल की किसी में भी जाने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल, ठीक है। सो दिस इज a very basic and very important principle. Now, sixth postulate is the equilibrium state. The equilibrium state of a system corresponding, the equilibrium state of a system corresponds to state of maximum probability. ओके, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, वो इट विल ऑलवेज कोरस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कि जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी द equilibrium state of the system. So these are the 6 postulates we have studied. Let's once again let's revise them. First is all gases are composed of a large number of molecules. बहुत ज्यादा molecules से बनके मिलता है. These molecules are in a constant random motion always. वो molecules constant random motion में रहते हैं, ठीक है. Second one is all the cells are of same size in the phase space. सभी सेल्स का साइज जो है फेज स्पेस में वो सेम रहेगा, कि चाहे वो कितना भी है. दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम साइज, ठीक है. ओके, थर्ड वन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट. जितने भी मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लो जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है k शेल्स में, तो वो टोटल मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट. उसमें अगर n1 पार्टिकल जाते हैं पहले शेल में, n2 दूसरे में, n3 तीसरे में, तो n के सेल्स जाएंगे kth सेल के अंदर, तो टोटल जो होगा उनका दैट विल बी द समेशन ऑफ
all those particles, n1 plus n2 plus n up to nk. It will be n and it will be equal to constant. Yeah, fourth one is we have just understood total energy of the system is constant. System की energy constant रहेगी easy भाषा में. And fifth one is all the accessible microstates corresponding to possible microstate are equally probable. हर microstate में जाने की probability किसी भी microstate में वो equal रहेगी. Okay, and then last one is equilibrium state of system correspond to state of maximum probability. Okay, so this is all for today. This is postulates of statistical physics. See you in the next lecture. Till then, like, share, subscribe the video, and I hope you're doing well. Thank you.